Written till Bronsted acids and bases. Please write the Lewis concept of acids and bases. Lewis concept. So, what did Lewis do? Lewis, he compressed the idea of acids and bases till the points of electrons. He said that anything that, just give me a second, let me share this. Okay. So Lewis said that anything that accepts electron pair is an acid. So acids, rather I should write acids accept electron. Okay. Electron pair, or we can say that they are electron pair acceptors. Secondly, what are bases? Bases donate electron pair. That is, these are electron pair donors. They're going to donate electron pairs. Okay, so this is a simple definition that was given by Lewis. On the basis of these definitions, we can do a few questions regarding the Lewis acid-base theory. This is a question in your NCERT. It is saying which of the followings are Lewis acids: H2O, BF3, H plus, and NH4 positive. Now, in this case, which of the following are Lewis acids? So, if you look at H2O, then hydrogen as well as oxygen, they have their octets complete. किसी का भी यहाँ पे octet ना empty नहीं है. Oxygen is also having 8 electrons in its valence shell, and hydrogen also is having 2 electrons, and both of them are in their noble gas configuration. So it is not a Lewis acid. Next, if you look at BF3, BF3 has this type of structure: fluorine here, and fluorine here. And since you can see that boron is having only 3 bonds that will give it 6 electrons in its valence shell, that means what? It is electron deficient. Its octet is not complete. Now, since it is electron deficient, it can accept a pair of electron. That is why you will say that, okay, fine, this is a Lewis acid. Next, we have H positive. Obviously, H positive, you can easily see that hydrogen is what? It is having a positive charge. That means absence of electron, and it can also accept electron. So this is also going to be Lewis acid. Now, when you look at NH4 positive, even though it is having a positive charge, it doesn't mean it is what? It is an electron pair acceptor. Why? Because if you look at nitrogen, then nitrogen is what? Having 4 bonds. And when it is having 4 bonds, it means there is what? Octet is already complete. It does not need any other electrons. If you look at hydrogen, hydrogen is making single bonds, and single bonds means 2 electrons, and hydrogens are there in their nearest noble gas configuration. So both nitrogen and hydrogen, they are having 8 electrons. They do not need electrons. They are not going to accept any pair of electrons further. So what is this positive charge? So that positive charge is only just the formal positive charge. It is not actually a positive charge. It is just the formal positive charge. It is not because of the absence of electron. Okay? It is not because of the absence of electron. यहाँ पे positive charge नहीं आ रहा है. ठीक है? So this is not Lewis acid, even though it is having a positive charge. It is not Lewis acid. ठीक? Now, next is this question. Classify the following species into Lewis acids and Lewis base. Show how these act as Lewis acids or base. ठीक है? So when you look at OH negative,
So OH negative, OH Lewis base. negative, it is a base. It has tendency to lose get electron pairs, है ना? It can lose electron pairs, and for example अगर ये इलेक्ट्रॉन किसको दे दे, H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन ये दे दे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये H2O बन जाएगा, ठीक. So this is how they can act as what? It can act as Lewis base. It is giving electron density. Similarly, you have F negative. F negative को अगर आप H plus के सामने लेके आइएगा, then F negative can give electron density. और यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपको HF मिल जाएगा. So this also can act as Lewis base. Then we have H positive. H positive can accept electron from species such as OH negative. और फिर ये पानी बन जाएगा. So that H2O. So this H positive is what? It is Lewis acid. Similarly, BCl3. BCl3. BCl3 plus It does. ammonia H2. Sorry. Yes, Rishita. Okay, this is also a Lewis acid. BCl3 is also Lewis acid because it can accept electron pair from ammonia, है ना? तो they are accepting electron pair, और फिर आपके पास नाइट्रोजन और बोरॉन के बीच में ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, एंड यहाँ पे 3 हाइड्रोजन इस तरह से, और इसके 3 क्लोरीन इस तरह से रहते हैं, ठीक है. So this is also what? This is also a Lewis acid because it is accepting electron pairs. Make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ठीक है. Now, just to summarize everything till here, we have 3 concepts: Arrhenius, then we have Bronsted-Lowry, and then we have the Lewis concept about acids and bases. Arrhenius का कहना है it gives H positive, bases give OH negative. Bronsted-Lowry, they say that acids are H plus donor, bases are H plus acceptors. Lewis says that acids are electron acceptors and rather electron pair. Let me just rephrase it. And bases are electron pair donors. अब उसके बाद देखिए, ये सारी चीजें जो डेफिनेशन है, इसमें आपको डायरेक्टली सवाल आ जाएगा, इसका एप्लीकेशन में आएगा कि आइडेंटिफाई करना है बेसिकली आपको, इससे न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं आते हैं. सो यहाँ तक जो हमने टॉपिक पढ़ा है, ब्रॉन्स्टेड-लाउरी, लुईस या फिर आर्हेनियस एसिड बेस कांसेप्ट्स, इसमें डायरेक्ट जो यहाँ तक पढ़ा है वहीं पे सवाल है. तो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू लर्न, इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको एंड तक काम आने वाला है. इसको आपको एज इट इज बिल्कुल रट समझना तो है ही, एंड यू हैव टू मेमोराइज दिस conclusion, whatever conclusion we are going to make from the next topic. The next topic is ionic product of water. Ionic product of water. This particular concept of ionic product of water, it is used till the end of this chapter, that is equilibrium. We have done with chemical equilibrium. अब जो भी ionic equilibrium हम लोग पढ़ने वाले हैं, वहां पे ionic product of water का जो concept है, ये हमेशा इस्तेमाल होता रहेगा, ठीक है. So you have to memorize this as a fact. So what is the ionic product of water? Water, it has tendency to auto-ionize. That means water which is in liquid state, it will be ionized into H positive. Inside liquid itself, H positive aqueous medium में आपके पास,
and OH negative that is also in the aqueous medium. ठीक है? So this is known as auto ionization of water. And if I want to write the equilibrium constant for this, this will be equal to the concentration of H positive multiplied by the concentration of OH negative, because these are in aqueous medium. For pure liquids, we don't take we don't consider their concentration because उनकी concentration constant होती है. Now this product of H positive and OH negative is known as ionic product of water, and which is represented by Kw. ठीक है? Kw means this is what ionic product of water. Kw का मतलब ionic product of water. ठीक है? Now it has a value at 25 degrees Celsius. Right, next point. Kw is a constant and is experimentally determined. And is experimentally determined at 25 degrees Celsius. Kw is equal to 1.008 into 10 to the power minus 40. ठीक है? तो इसको आप क्या याद रखेंगे? Kw it is equal to 10 to the power minus 40. ठीक है? This is the value that you have to remember. The unit for this is यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आपने H plus C concentration into OH negative concentration. So the units आप यहाँ पे लिख सकते हैं, that is moles per liter per inverse. वो सब आप लिखने की जरूरत नहीं है, but the most important thing is आपको ये याद रहना चाहिए, Kw is equal to 10 to the power minus 14 और Kw होता क्या है? H positive into OH negative. Make sense? Yes or no? Do you tell me? Yes, sir. And if you are going to increase the temperature, so obviously बात है कि splitting जो होगी ना, auto ionization होगा, dissociation होगा, that would also increase. And if you are getting more H positive and OH negative, then यहाँ पे concentration बढ़ेगा और फिर Kw भी बढ़ जाएगा. So on increasing the temperature, Kw increases. ये एक ऐसा actual सवाल पूछा जा सकता है. Kw increases with increase in temperature. ठीक है? अच्छा, in pure water, ध्यान रखिएगा, the concentration of H positive you are having will be equal to concentration of OH negative. Make sense? Yes or no? Because जितना H2O टूटेगा उतना H बनेगा और उतना ही OH negative बनेगा, because the source of H positive is H2O and the source of OH negative is also H2O itself. और कोई है नहीं यहाँ पे. That means the concentration of H positive and OH negative will be equal. And since the concentration we have seen H positive and concentration of OH negative is equal to 10 to the power minus 14. So in दोनों का half half होगा. That would mean the concentration of H positive will be equal to 10 to the power minus 7, and that will be the concentration of OH negative also, because 10 to the power minus 7 into 10 to the power minus 7 will give you 10 to the power minus 14. ठीक है? So this is another thing that you have to remember. These two things are equal at room temperature and when you have pure water. ठीक है? No. अब तो हमारे पास ये आ गया है, ठीक है, कि प्योर वाटर में ऐसा होता है. What would happen if we add acid inside the water? Right, next point. Addition of acid in water. ठीक है? Look at addition of acids in water, and we will also look at addition of base in water. Now, as soon as if H plus is going to increase, because we are adding acid से क्या होगा? H positive increase करेगा. ठीक है?
जैसे H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो यहाँ से, चलिए एक काम करते हैं, हम आपको ना सब कुछ दिखाई देता है। वेट अ सेकंड। Now, once you have added acid in water, then there are two equilibrium that exist inside water. ठीक है, एक तो आपके पास पानी जो है H2O, that is in equilibrium with H positive and OH negative. Then you will have some acid that is having AH. This will be in equilibrium with H positive and A negative. ठीक है. Now, if you look at the first equilibrium, this is the first reaction, this is the second reaction. As soon as you add acid, what happened? ध्यान से सुनिएगा. The concentration of H positive increased. The concentration of H positive, it increased. Now, what effect it would have in the first equilibrium? अगर first equilibrium के perspective से देखें, then the amount of product has increased, and as the amount of product will increase, this particular equilibrium will go in the backward reaction, in the backward direction. Make sense? Yes or no? Please tell me. बात समझ में आ रही है आप लोगों को? As soon as we have added H positive, the effect of this on the first equilibrium will be the product has increased, the concentration of product has increased, and that is why the first equilibrium will shift in the backward reaction, in the backward direction. Make sense? Yes or no? Please tell me, guys. बात समझ में आ रही है? Yes, Rishita. So can you repeat that? ली चैटलेट प्रिंसिपल याद है? प्रोडक्ट को इंक्रीज करने से बैकवर्ड रिएक्शन, Yes, sir. रिएक्टेंट, वही तो हो रहा है ना. आप ये समझिए कि आपने H पॉजिटिव को इंक्रीज किया ना व्हेन यू एडेड एसिड. Oh, okay, yeah. ठीक है. नाउ व्हाट विल हैपन टू दिस इक्विलिब्रियम में इसको क्या समझ में आएगा? इसको समझ में आएगा H पॉजिटिव बढ़ रहा है, सो H पॉजिटिव बढ़ रहा है तो फिर एक बैकवर्ड जाना पड़ेगा, है ना. इट विल गो बैकवर्ड, एंड व्हाट वुड हैपन व्हेन इट गोस बैकवर्ड? द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव विल आल्सो डिक्रीज. So as soon as you add acid, then not only the concentration of H positive will increase, but the concentration of OH negative will also decrease. As concentration of H positive increases, concentration of OH negative will decrease. दोनों ही चीजें होंगी, ध्यान रखिएगा बिल्कुल. ठीक है. But the Kw does not change. Kw is a constant. पानी है अगर, तो पानी Kw it will be equal to 10 to the power minus 14. अब उसी हिसाब से फिर ये दोनों बैलेंस करेंगे अपने आप को, H positive and OH negative. You know that concentration of H positive divided by the concentration of OH into the concentration of OH negative will be equal to 10 to the power minus 14. The concentration of OH negative that will be there in the system will be equal to 10 to the power minus 14 divided by the concentration of H positive. The concentration of H positive will be nothing, but it will be the concentration of acid that we have added. क्योंकि जो हमारे पास मेन सोर्स है, अब H plus का मेन सोर्स कौन है? एसिड है. So the concentration of H positive that we are having will be equal to the concentration of acid. So this is how we can get the concentration of OH negative after the addition of AH. Similarly, in addition of base, what happens? We have the first equilibrium, that is H2O, that is in equilibrium with H positive plus OH negative, and we have BOH, that is a base. It will be in equilibrium with B positive and OH negative. Now, as the concentration of OH negative will increase, we will say that the concentration of H positive would decrease. Now, since the Kw, it will remain same, that is Kw will still be equal to 10 to the power minus 14. The concentration of H positive and the concentration of OH negative, their product will be equal to 10 to the power minus 14. Now, since we don't know what is the concentration of H positive in the system right away, but we know how much amount of base we have added, and the primary source of OH negative will be the second equilibrium. So we can write the concentration of H positive will be equal to 10 to the power minus 14 divided by the concentration of OH negative. And the main source of OH negative here is not the first equilibrium, but rather the second equilibrium, that is from the base. So we'll write BOH, the concentration of BOH. Okay, please write this down. Raise your hand once you're done.
Please raise your hand once you're done. Waiting for Amna, Khadija, and Kureja. नेक्स्ट थोड़ा सा हम लोग ना लॉग पढ़ लेंगे, ठीक है, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज लॉग्स टू मच फ्रॉम हियर। अब इसके बाद से लॉग का इस्तेमाल बहुत होने वाला है, सिर्फ थोड़ा सा मोटा मोटा हम लोग लॉग पढ़ लेते हैं। ठीक है, समझ लीजिएगा एक बार में, ठीक है, ऐसे बिल्कुल लूजली मत लीजिए इसको। टॉपिक लिख लीजिएगा, लॉगरिदम। ठीक है, लॉग्स में ध्यान दीजिए, बेसिकली क्या होता है लॉग्स, तो इसका सिंपल डेफिनेशन एक्चुअली में क्या होता है उसका आप इससे याद रख सकते हैं, लॉग 100 इज इक्वल टू 2। एक नंबर जो यहाँ पे छुपा हुआ होता है दैट इज 10 लॉग। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ नाम है इसका, दिस इज द बेस। ठीक है, तो फिर बाकी को क्या बोलते हैं, ये तो लॉग बेस हो गया। Just give me a second. ये बेस है, ये वैल्यू है, और ये जो है ना ये आपका एक्सपोनेंट है। ठीक है, सो लॉग इज जस्ट अनदर वे ऑफ टेलिंग 10 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 100, है ना, 10 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 100, उसी को दिखाने का दूसरा तरीका है। मेक सेंस सम ऑफ दिस मी? हाँ जी बताएं। यस सर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले विल टॉक अबाउट अ फ्यू रूल्स और लॉज ऑफ लॉग। सबसे पहला क्या होता है, द फर्स्ट रूल ऑफ द लॉग इज log of 1 is equal to 0, क्योंकि 10 to the power 0 will be equal to 1। मेक सेंस ये सब tell me? सही यस है। सर। सेकंड, log of a into b is equal to log of a plus log of b प्लस log of b। थोड़ा इसको यहाँ पे ऐसे समझ लेते हैं हम लोग कि देखिए, जैसे log of 100 is equal to 2, है ना, उसी तरह से अगर हम कहें इस यहाँ पे log of 1 2 3 4
will be equal to how much? तो 10 to the power how much will be equal to 10,000? तो 4 जीरो लगाएंगे तो 4 हो गया. मेक सेंस? yes or no? प्लीज टेल मी. सही है. 10 to the power 4 Yes, will sir. be equal to, है ना. अब इसी को देखिए ऐसे भी लिखा जा सकता था, log 100 into 100 will be equal to 4 को हम 2 plus 2 लिख सकते थे. और 2 क्या होता है? log 100 plus log 100. ठीक है. So from here you can understand that it is what it is. Log of 100 into 100 is equal to log 100 plus log 100. Similarly, log of a by b will be equal to log of a minus log of b. And from here we can say that log of 1 upon a will be equal to minus log a. कैसे? ठीक है. log 1 upon a क्या होगा? log 1 minus log a. log 1 होता है 0, है ना. और 0 माइनस कुछ भी करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? माइनस log a आ जाएगा. ठीक है. तो दिस इज log 1 upon a is equal to minus log a. Another very important rule is log of a to the, मान लीजिए आपके पास a into a होता. ठीक है. तो आप क्या लिखते? log a plus log a. That will give you 2 times of log a. Okay. अब यहाँ पे ये देखिए यही स्क्वायर था, a स्क्वायर. तो हम क्या बोल सकते हैं? 2 इधर नीचे आ गया, 2 log a. तो सिमिलरली वी कैन ड्राइव अ रूल कि log a to the power b will be equal to b times log a. Make sense? Yes or no? Yes, sir. ठीक है. So these are the basic rules or the properties of log that you have to remember. Log of 1 हो गया. फिर उसके बाद this is known as the product rule. This is rule known as the quotient rule. And ये उसी में से आ जाएगा. ठीक है. And this is known as the power rule. ठीक है. और इसके अलावा there are few other rules also, but you don't have to remember it. एक और अगर आप लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं. Sixth, if log of a is equal to log of b with some common base c. दोनों में बेस क्या है? c बेस है यहाँ पे. ठीक है. then in that case we can say that a will be equal to b. a और b दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे. ठीक है. बट टिल हियर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही तक आपको याद रखना है. प्लीज कॉपी दिस डाउन. डन. लेट मी नो वंस यू डन. प्लीज रेज योर हैंड वंस यू डन.
Rishita and Khudeja, please raise your hand once you're done. देखिए, नेक्स्ट आप लोग को याद रखना पड़ेगा, देर आर 4 log values that you guys need to remember. The first 4 prime numbers, ठीक है, उनका log value आपको याद रखना पड़ेगा. That is log 2, log 3, बिल्कुल ऐसे याद रखिएगा, log 5 एंड log 7. ठीक है, log 7. log 2 जो होता है, log 2 की वैल्यू होती है 0.3. ठीक है, log 3 का क्या करना है, 3 से एक नंबर आगे, 7 से एक नंबर आगे, 0.48. log 7 के लिए क्या कीजिएगा, log 7 के लिए आपको क्या करना है, इसको पलट दीजिए बस, 48 था 84 कर दीजिए, 0.84. ठीक, log 5 के लिए अगला नंबर, दैट इज 0.7. 2 के लिए आपको 3, 5 के लिए 7. log 3 निकालना है तो 3 का आगे नंबर 1 और 7 का आगे एक नंबर, 48. log 7 के लिए जस्ट पलट दीजिए. दीज आर द 4 log values. Obviously these are approximations, not the exact values. ठीक है ना, ये exact values नहीं है, ध्यान रखिएगा. These are approximations. अगर आपको log की वैल्यू नहीं दी हुई है, then you are going to use these values and get the answers. अब इसके बाद you can get the log of any number. Any number in the sense from 0 to from 1 to 10. तो आपके पास सबसे पहले log 1. By definition log 1 it is equal to 0. सेकेंड है आपके पास log 2 which is equal to 0.30, 10 होता है 0.30. log 3 is equal to 0.48. log 4 जो होगा that will be 2 times of log 2, because 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, which will be equal to 0.6. log 5 की वैल्यू आपको पता ही है, that is equal to 0.7. log 6 जो होगा that will be equal to log 3 into 2, which we can write as log 3 plus log 2. 3 plus 2 कितना हो जाएगा, 0.78. Then we have log 7 which is equal to 0.48. इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है. Then we have log 8. 8 can be written as 2 का cube, so it will be 3 times log 2, which will be equal to 0.9. Then we have log 9. log 9 can be written as twice of log 3, because 3 square it is equal to 9. Twice of log 3 will be equal to how much, 0.96. And log 10 जो होगा, this will be equal to 1, because 10 to the power 1 will be equal to 10. So these are the log values that you have. अब देखिए इसके अलावा ना, if you have any other composite number, जैसे आप किससे पूछिएगा log 12, या फिर आप थोड़ा सा ऊपर भी ले सकते हैं, log आपके पास चलिए मान लीजिए log 12 है आपके पास, ठीक है. So log 12 can be written as log of 4 into 3, ठीक है, which can be written as log 4 plus log 3. अब आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. log 4 it is equal to, you have the value here 0.6, and log 3 it is equal to 0.48. It will be equal to 1.08 हो जाएगा ना. हाँ, 1.08 will be the value of log 12. ठीक है, एंड द वैल्यू, द एग्जैक्ट वैल्यू की अगर हम बात करें तो भी, just give me a second. This is the value 1.79 है ना, और 1.08 आपका आ रहा है, so it is good enough. लेकिन मान लीजिए आपके पास आ गया कोई इस तरह का, जैसे log 37 आ गया. ऑब्वियसली 37 इज अ प्राइम नंबर, तो इसका आप लोग और फैक्टर तो कर नहीं सकते हैं. सो देर आर 2 ways दैट यू कैन यूज हियर. अगर बहुत ही बड़ा नंबर है, ठीक है, अगर मान लीजिए छोटा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर जैसे 11 वगैरह आ गया ना, 11 वगैरह आ गया, ठीक है, मान लीजिए हम 11 का ही बता रहे हैं.
अगर आपके पास 11 आ गया तो आप क्या कीजिएगा, log 10 प्लस log 12 इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दीजिएगा, सिंपल। log 10 की वैल्यू आपको पता है 1 है, log 12 की वैल्यू क्या है 1.08 डिवाइड बाई 2, कितना हो जाएगा 2.08 डिवाइड बाई 2, दैट विल बी इक्वल टू 1.04। ठीक, एंड द एग्जैक्ट वैल्यू फॉर log is 1.04139 ऐसे करके 41। सो यू कैन सी दैट log 11 का प्रेटी क्लोज वैल्यू यू हैव गॉट। लेकिन जब मान लीजिए आपके पास आ गया log फॉर एग्जांपल 47 किसी से डिवाइड नहीं होता ना, 47 इज अ प्राइम नंबर, राइट, यस और नो? 47, Yes, sir. हाँ ठीक है, 47 अगर आ गया आपके पास तो आप 46 प्लस 48 ना करने के बजाय व्हाट यू विल डू, आप बस एक नंबर ऐसे बढ़ा दीजिएगा आगे, ठीक है। log 47 जो होगा इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू log 48, ज्यादा फर्क दोनों में नहीं होगा। ये आप मेरी मतलब मान के चलिए हमने देखा वैल्यूज को ये करते हुए, और ऑल्सो यू कैन रियलाइज फ्रॉम हियर ऑल्सो, यहाँ पे भी आप रियलाइज कर सकते हैं कि जो इनिशियल आपके पास देखिए जो चेंज आ रहा है यहाँ पे 0.3 का चेंज आ रहा है, दैट इज क्वाइट लार्ज। 1 से 2 में अगर आप जाइए तो कितने का चेंज आ रहा है, 0.3 का आ रहा है। log 2 से आप 3 जाइएगा तो क्या चेंज आ रहा है, 3 से 0.18। देख रहे हैं आप कि अगर आप 2 और 3 में देखें तो फर्क बहुत कम है। log 3 से 4 जाइएगा तो फिर से आपके पास 0.12। तो एज यू आर गोइंग लार्जर टू लार्जर वैल्यूज, तो वहां पे जो फर्क है ना दोनों का क्या होते जा रहा है, कम हो, मिनिमाइज होते जा रहा है, ठीक है। सो इफ आई सी द वैल्यूज ऑफ log 47 एंड 48, 47 का log वैल्यू आ रहा है 1 पॉइंट, दिस इज 1.67, 1.67, ठीक है। और 48 का जो log वैल्यू आ रहा है दैट इज 1.68, ठीक है। तो क्या ही दोनों में फर्क हो गया, कुछ ज्यादा फर्क तो है नहीं। लेट मी सी, 1.47 का लॉग क्या था, 1.67, हाँ 672, ठीक है। तो फिर भी देखा है आप लोगों ने दैट देयर इज नॉट मच डिफरेंस, ये सुनो, अप्रोक्सीमेशन इतना लेके चलेंगे तो आप लोगों को गलत नहीं होगा। बट फिर भी अगर आपके पास टाइम, जनरली दे देते हैं लॉग का वैल्यूज वो लोग, ठीक है, अगर नहीं दिया तब क्या हम बात बता रहे हैं, बट यू हैव टू यूज दीस मेथड्स। मेक सेंस एवरीवन, ये सुनो प्लीज टेल मी। Yes, sir. चलिए प्लीज कॉपी दिस डाउन। लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. नेक्स्ट देखते हैं। एक और कंसेप्ट होता है दैट इज एंटी लॉग, ठीक है। तो एंटीलॉग जो कंसेप्ट होता है इट इज वो मतलब कुछ खास इसका मतलब नहीं, एंटीलॉग का बस होता है मतलब कि 10 to the power x आपको बताना रहेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको बोला हुआ है कि एंटीलॉग ऑफ 0.30, ठीक है। इसका ये मतलब होता है दिस इज इक्वल टू 10 to the power 0.30, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। मेक सेंस, ये सुनो, एंटीलॉग का क्या मतलब हुआ, आपको 10 to the power कर देना है बस। बात समझ में आ रही है सबको, ये सुनो प्लीज टेल मी। हाँ जी बताएं। Yes, sir. ठीक है, तो अब देखिए आपके पास ना कुछ हम वैल्यूज यहाँ पे रख रहे हैं, जैसे 10 to the power 0.30, तो हम लोगों ने ये समझा था अभी लॉग में कि log 2 इज इक्वल टू 0.30। तो जैसे ही आपको ना एनी वैल्यूज विच इज नियर बाई द लॉग वैल्यूज दैट वी हैव गॉट फ्रॉम 1 to 10, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 10 to the power 0.30 विल बी इक्वल टू 2, है ना। 10 to the power 0.30 विल बी इक्वल टू 2, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा इसका आंसर। बात समझ में आ रही है, जैसा नो प्लीज टेल मी। बात समझ में आई आप लोग को, हाँ या ना, जल्दी Yes. बताएं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपके पास आया एंटी लॉग आएगा या फिर 10 to the power आया ना, मान लीजिए आपके पास आया 10 to the power
4.30, 4.3 आया, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखिएगा, आप इसको ऐसे लिखिएगा 10⁴ + 0.3। आप इसको कैसे लिख सकते हैं फिर? 4 + 0.3 कैन बी री रिटन एज 10⁴ मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴ अब 10⁴ तो वही रहेगा, 10⁻⁴ क्या है था, 2 था, 2 इंटू 10⁴ हो जाएगा। मेक सेंस, ये प्लीज टेल मी। बात समझ में आ रही है? क्या ख्याल है? यस सर। ठीक है, चलिए हम कुछ नॉर्मल वैल्यूज देते हैं। कैलकुलेट एंटीलॉग ऑफ फॉलोइंग। पॉइंट 7 जैसे 3.5 की अगर मान लीजिए, है ना, तो फिर आप लोग को अप्रोक्सीमेशन वहां पे करने पड़ेंगे। आप लोगों में से किसी ने भी लॉग पढ़ा है इससे पहले? रेज योर हैंड इफ यू हैव लर्नड लॉग। अच्छा, किसी ने नहीं किया। हाँ जी, कुछ आंसर आया तो बताइए। Sir, is 10 raised to 0.9, is it 0.7 approximately value? नहीं, 7 नहीं होगा ना, तो 0.9 सीधा आ जाएगा 8। अरे एक सेकंड, 0.7 को ना यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लीजिए, 0.84 होगा, हमने वो 48 लिख दिया था गलती से, पता नहीं क्यों। ठीक है ना, जीरो लॉग 7 को चेंज कर लीजिए जरा, इट इज 84। Okay, sir.
देखिए गाइस, आसान है यार, आप लोग देखें। आपको क्या करना है, 10⁻².7 क्या हो जाएगा, 10⁻² प्लस 0.7। क्या ले सकते हैं आप, 10⁻�0.7 कितना होगा, 5 ना, यस सर। है ना, 5 × 10⁻² हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा हम लोग सीधा ये कर सकते हैं ना, 10⁻5, ये 10⁻5 तो रहेगा ही, और 10⁻0.3 होता है 2, तो आई कैन राइट 10 × 2 × 10⁻5, मेक सेंस। Yes, sir. The third one will be 10 हाँ raised to 4 into 8. हाँ, Fourth, 10 raised to 3 into 3. या करेक्ट, वेरी गुड। 5 को अप्रोक्सीमेटली 4/8 कर दिया ना। Yes, sir. हम्म, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा ना, इससे अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एंटी लॉग ओनली, बट यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आएगा। प्लीज राइट कैलकुलेट एंटी लॉग ऑफ फॉलोइंग, कैलकुलेट द फॉलोइंग भी कर देते तो चलेगा, कैलकुलेट दी फॉलोइंग। ठीक है, सबसे पहला है आपके पास, मान लीजिए यू हैव ऐसे कर लेते हैं 0.001। ठीक है, क्या है आपके पास, 0.0 नहीं, 001 छोड़ दीजिए, इसको नहीं, मतलब ये भी हो जाएगा कैलकुलेट, ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। जैसे आपके पास मान लीजिए 6.4 या -6.4, नेगेटिव वाला है ना, हाँ नेगेटिव वाला करते हैं, ठीक है, -6.4, एंटी लॉग -6.4, ये आएगा हम लोग को आगे, एंटी लॉग -6.4। ठीक है, तो अब आप लोग को क्या करना है, 10⁻⁻6.4 करना है, ठीक है। बट ये ध्यान रखिए, -6.4 हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग -6.4 को ना थोड़ा चेंज करके लिखेंगे। 6.4 के बाद वाला नंबर कौन सा होता है, दैट इज 7, है ना। हम इसको क्या लिखेंगे, आई विल राइट दिस एज 10⁻, ऐसा कर लेते हैं, -7 प्लस 0.6, ऐसे लिख सकते हैं, क्या ख्याल Yes, sir. है ना। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, जो नंबर नंबर है ना, जो नेचुरल नंबर है, 7 हो गया, 8 हो गया, दिस कैन बी नेगेटिव। जो डेसिमल वाला है, वो हमेशा पॉजिटिव में रहना चाहिए, आपको इस तरह से कुछ कन्वर्ट करना पड़ेगा। नाउ आई कैन राइट दिस, व्हाट आई कैन राइट दिस एज 10⁻⁻7 इंटू 10⁻0.6, सही है ना। और 10⁻0.6 कितना होता है, 4 × 10⁻⁻7 हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ रही है, जी बताएं। Yes, sir. ठीक है, अब इसी तरह से एक और आप लोग कैलकुलेट कीजिए, एंटी लॉग माइनस, देखिए टेक्स्ट बुक में हम लोग को कुछ कुछ कैलकुलेट करना, उसी में से हम दे देते हैं। मान लीजिए आपके पास है -1.2,
6. ठीक है, देखते हैं. So this will be 10 to the power minus 1.2, which can be written as 10 to the power minus 2 plus 0.8 plus 0.8 है ना. और 0.8 के नजदीक कौन सा आ जाएगा? हाँ ठीक है, 6 ले लिया आपने, वेरी गुड. सो आई कैन राइट दिस एज 10 to the power minus 2 into 10 to the power 0.8, which can be written as 6 into 10 to the power minus 2. ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया. अब आपको इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी whenever we are going to deal with log pH वगैरह. pH में मेन आपको इस्तेमाल आने वाला है. ठीक है, चलिए सवाल. अब आप लोग हेडिंग डालिए pH स्केल. ये आपका हो गया, लॉग हो गया खत्म. डालिए हेडिंग pH स्केल. ठीक है, pH स्केल. pH बाय डेफिनेशन क्या होता है? pH इज द नेगेटिव लॉग ऑफ नेगेटिव logarithm of molar concentration of H plus ions. H plus ions की मोलर कंसेंट्रेशन का नेगेटिव लॉग. तो pH क्या है? इट इज द नेगेटिव लॉग ऑफ द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन. बस दैट्स इट, यही सारी बात है. इतना ही होता है pH. अब हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं POH बोलते हैं. ठीक है, वी कॉल इट POH. POH क्या होगा? That will be negative log of the concentration of OH negative. OH negative की concentration हो जाएगी. Just give me a second. Okay. So we have pH as well as POH. pH is minus log of H positive and POH क्या है आपके पास? Minus log of OH negative. ठीक. अब थोड़ा सा इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, उस रिलेशनशिप को हम लोग देख लेते हैं. See here guys. हमारे पास है माइनस लॉग ऑफ, ये रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीओएच जो होता है उसको ऐसे दिखाया जाता है, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव. यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं, माइन प्लस होगा लेकिन फिर इधर माइनस लॉग ऑफ ओ एच नेगेटिव. ठीक है ना. दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, माइनस को अगर हम कॉमन ले लें तो लॉग ऑफ एच पॉजिटिव, सही है, प्लस log of OH negative. Now, by applying the rule of log, log A plus log B will be equal to log A plus B. तो माइनस साइन यहाँ पे ऐसे ही रह गया. log of H positive into the OH negative है ना. ठीक है. अब H positive into OH negative ये हम लोगों को पता है क्या होता है, 10 to the power minus 14. तो माइनस यहाँ पे ऐसे ही रह गया, log 10 to the power minus 14 हो गया ये. ठीक है. अब ध्यान दीजिए जरा. अब ये -14 नीचे उतरेगा तो क्या हो जाएगा, +14, बिकॉज -14 और फिर माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, +14. एंड log 10 की वैल्यू हम लोगों को पता है क्या होती है, इट इज 1. तो पीएच प्लस पीओएच में जो रिलेशनशिप है दैट इज इक्वल टू 40. कॉपी दिस डाउन, रेज योर हैंड वंस यू डन.
Waiting for Amna and Khadija. Please raise your hand once you're done. Amna and Khadija waiting for you guys. आप लोगों ने लिख लिया होगा. I don't know why Amna and Khadija are not raising hand. Now let us see some questions. Assuming complete dissociation, calculate the pH of the following solutions. ठीक है, ध्यान दीजिए जरा. तो यहाँ पे आपके पास ये पहला एसिड है, उसके बाद बेस है, फिर एसिड है, फिर उसके बाद बेस है. ठीक है, तो इसमें से हम एक एसिड और एक बेस कर देंगे, बाकी दोनों आपके लिए होमवर्क रहेगा. ठीक है, ध्यान दीजिएगा. सो व्हेन यू आर हैविंग कंप्लीट डिसोसिएशन, तो उसका मतलब ये है कि HCl जो भी लिया है आपने, it is getting dissociated into H positive and Cl negative. So the amount of H positive inside the system will be equal to the amount of HCl we have taken. So जब आपको pH निकालना है, we need the concentration of H positive. This will be equal to the concentration of HCl itself, because जितना HCl लिया है उतना ही आपको H plus मिल जाएगा. So this will be equal to 0.003, that I can write as 3 into 10 to the power minus 3. Does this make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. 10 to the power minus 3. ठीक है. और pH क्या होता है? pH it is equal to minus log of the concentration of H positive. Now minus log concentration of H positive is 3 into 10 to the power minus 3. So this will be equal to minus को हमने ऐसे ही रखा है, log 3 into 10 to the power minus 3 था, तो प्लस क्या हो जाएगा, log of 10 to the power minus 3. ठीक है. Now माइनस साइन ऐसे ही का ऐसे ही बिल्कुल. log 3 की वैल्यू क्या होगी, 0.48. ठीक है. नाउ 10 टू दी पावर माइनस 3 है, तो ये सॉरी माइनस 3 नीचे आ जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, माइनस 3 इस तरह से. नाउ 0.48 माइनस 3, दिस विल बी इक्वल टू, टेल मी व्हाट, कितना जाएगा, 2.52. सही है, ये सब प्लीज टेल मी. Yes, sir. इट विल बी नेगेटिव, और वो नेगेटिव इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है. सो द pH दैट वी आर गेटिंग इज 2.52. मेक सेंस? yes or no, please tell me. Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़े. देखिए बी पार्ट में थोड़ा अब हम इतना ज्यादा सॉल्व नहीं करेंगे. ठीक है ना. जब कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, वी आर गेटिंग 1 मोल ऑफ OH नेगेटिव. यहाँ पे आप pH नहीं निकाल के क्या निकालिएगा, POH निकालिएगा. ठीक है. विल कैलकुलेट द POH, और उसके बाद वी विल यूज दिस रिलेशनशिप pH प्लस POH इज इक्वल टू 14. तो टू गेट व्हाट, टू गेट द pH. नाउ POH आई कैन राइट, इट इज माइनस लॉग ऑफ OH negative concentration. Now the concentration of OH negative, it is equal to what, 0.005. So minus log of 5 into 10 to the power minus 3. Just give me a second. Yes. Okay, so minus log of 5 into 10 to the power minus 3. ठीक है. तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी माइनस, आई शुड यूज दैट सेम लाइन, दिस विल बी इक्वल टू माइनस log of 5 plus log of 10 to the power minus 3. ठीक है. अब आपके पास आंसर आ जाएगा, POH जो होगा दैट विल बी इक्वल टू
माइनस ऑफ लॉग 5 की वैल्यू क्या होती है? 0.7 -3। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? पी ओ एच आ रहा है कितना? 2.3। मेक सेंस? यस और नो प्लीज टेल मी। दिस इज पी ओ एच, और आपको क्या Yes, sir. निकालना है? पीएच निकालना है। ठीक है, तो पीएच विल बी इक्वल टू हाउ मच? पीएच हो जाएगा यहाँ पे 14 माइनस 2.3, विच विल बी इक्वल टू हाउ मच? 12, 11, 12.7, 12.7 या 11.7, 11.7. है ना? पीएच विल बी 11.7। ठीक है, बस एक बार आप लोग देख लीजिएगा, बिकॉज NaOH है तो 7 से ज्यादा रहना चाहिए। आई होप आप लोग को ये सारी चीजें पता है, दैट 7 इज न्यूट्रल, लेस देन 7 इज एसिडिक, एंड मोर देन 7 इज बेसिक। मेक सेंस टिल हियर? यस और नो प्लीज टेल मी। Yes, sir. कॉपी दिस डाउन। बाकी दो आप लोगों को करना है, सी और डी। Raise your hand once you're done. Waiting for Amna and Khadija. सर चलिए, मूविंग ऑन। नेक्स्ट है आपके पास, लाइक यू हैव बीन गिवन द पीएच और आपको वहाँ पे H प्लस कंसेंट्रेशन बतानी है। ठीक है, सो इट वुड वर्क द सेम वे। अच्छा, एक चीज हम लोगों ने लिखी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, बट फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास H प्लस कंसेंट्रेशन है ना, देन हाउ टू कैलकुलेट, यहीं पे आपको पता चल जाएगा। देखिए,
यू नो दैट द pH, या फिर हम ऐसे बात करें अगर, yeah, you can say that minus log of the concentration of H positive is equal to pH. So the base is 10 here, and minus sign को अगर हम उधर भेज दें, then log of H positive will be equal to minus pH, and 10 to the power minus pH will give you the concentration of H positive. So concentration of H positive will be equal to 10 to the power minus pH. ठीक है, and that is why the negative antilogs are important. ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे ह्यूमन ब्लड 7.38 है ना। और लगा क्या ड्रैकुला जैसा सवाल है ये, ह्यूमन ब्लड का एक्सप्रेस कंसंट्रेशन, बट इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि ह्यूमन ब्लड इज 7 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 7.4 7.38। और जब भी like in my internship, whenever we used to do some calculations for proteins and everything, then we have to take this human blood pH into consideration also. Like whatever proteins are made for human body medicines में जो use होता है ना, so they are always made in a pH of 7.4, क्योंकि अगर आप 7.4 pH में रख के उसको सारा टेस्ट किया जाता है। दैट इज वाई द ह्यूमन ब्लड pH is quite important. Now we will calculate the concentration of H plus ion, है ना, हाइड्रोजन आयन concentration calculate करना है। So we know that the C question we are doing, concentration of H plus will be equal to 10 to the power minus 7.38, and we know we have to just manipulate this number. So minus 7.38 I can write as 8, sorry, minus 8 plus how much, 38 तो हो जाएगा आपके पास 42, 0.42। मेक सेंस, yes or no? 42 ही ना, 42 नहीं, ज्यादा ज्यादा होगा, थोड़ा ज्यादा होगा ना, 42 नहीं, 62, राइट? yes or no, please tell me, सही है? Yes, sir. है ना, ये फिर -7 आ जाएगा ना, -7.38। हाँ ठीक है, होप सो। लेट मी चेक, थोड़ा सा मेरे को पता नहीं क्यों ये हो रहा है। -8 प्लस 0.62, -7.38, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 to the power -8 multiplied by 10 to the power 0.62. So I can say that the concentration of H plus ion in this case will be equal to how much, कितना हो जाएगा, 10 to the power 0.6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, that is approximately आपका 0, आपको 4 हो जाएगा ना ये, yes or no, 4 हो जाएगा, 0.6 will be equal to 4 ना, हाँ 4 हो जाएगा ये, ठीक है। So 4 into 10 to the power -8। ठीक है, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। बाकी सिमिलर ही है बिल्कुल, है ना, एंड देयर इज नॉट मच चेंज इन द मेथड। ए बी, बाकी आप ए बी डी आपको कैलकुलेट कर लीजिएगा एज अ होमवर्क। Now we are going to look at one of the last and important questions, is the pH of mixtures. इससे पहले आपके पास ना, हम थोड़ा बता देते हैं आप लोग को, एक इस तरह का सवाल है, दिस इज नॉट मिक्सचर बट दैट इज प्योर सॉल्यूशंस इटसेल्फ। पहला वाला सवाल छोड़ दीजिए, बिकॉज थैलियम हाइड्रोक्साइड you would not know what is the atomic number वगैरह आप लोग को याद नहीं होगा। we can say for example आपके पास है 0.3 grams of NaOH dissolved in water to give 0.3 नहीं लेके ना, हम इसको 0.4 ले रहे हैं ना, just for calculations, क्योंकि NaOH का जो वेट होता है that is 40 मोलर होता है, 40 मोल्स, 40 ग्राम्स पर मोल होता है, ठीक है, टू गिव अ 200 ml सोल्यूशन। ठीक है, तो इसका अगर आपको पीएच निकालना है, देन हाउ वुड यू कैलकुलेट इट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गेट दी मोलारिटी, है ना, NaOH का आप मोलारिटी निकाल लीजिए, दैट्स इट।
So the concentration of NaOH molarity will be equal to what? The number of moles of solute divided by the volume of solution in liters. Now number of moles of solute की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? The given mass of solute divided by the molar mass of solute multiplied by वॉल्यूम. अगर आपके पास ml में है तो ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा इधर. ठीक है, बिकॉज ml को अगर आप 1000 से डिवाइड करेंगे तब लीटर आएगा. 1000 नीचे डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर विल बी न्यूमरेटर. So WB is equal to 0.4 multiplied by 1000 divided by molar mass of NaOH is 40 multiplied by the milliliters of water is 200. तो बेसिकली आपके पास दिस जीरोस विल बी कैंसल्ड, है ना, और 3 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. एक काम करते हैं, इस जीरो को, एक जीरो को नहीं कैंसिल करते हैं, कैंसिल जल्दी कर भी दीजिए, क्या दिक्कत है. ठीक है. So now we are remaining with 0.4 divided by 4 into 2. ठीक है. तो 0.4 10 सा 4 हो जाएगा. 0.4 में 10 मल्टीप्लाई कीजिएगा, you will get 4. This will be equal to 1 upon 20. 1 upon 20 is the molarity, the concentration, that is equal to how much? 1 upon 20 will be equal to 0.05, I guess, right? सही है? Yes, sir. है ना? Now you have the concentration of OH. Concentration of NaOH will be equal to the concentration of OH negative also, because complete dissociation होगा strong electrolyte है, which is equal to how much? 0.05. Now you have got the concentration of OH negative. अब इसी मेथड को यूज करके हम जो pH निकाल रहे थे वहां से आपको pH निकल जाएगा.